Good morning, dear students. I am Randhir Kumar Ranjan, your English teacher. Today, I am going to discuss about gender. In previous class, I taught about gender, masculine and feminine. Masculine gender denotes a male, and feminine gender denotes female. Masculine example: boy, ox, dog, etc. These words denote masculine gender. And feminine gender. Feminine gender denotes a female. Female as lady, woman. So, example: girl, cow, beach are feminine genders. Example. And today I am going to discuss about common gender and neuter gender. Common gender: nouns that can be either male or female are called common gender. Example: teacher, parents, doctor. These are words. These words are used for both. Doctor. Doctor can be lady or gents. Teacher can be lady or gents. Parents, lady and gents. Father and mother. And neuter gender. Neuter gender denotes, neuter gender is all non-living things are called neuter gender. All non-living things. You all read in science living and non-living things. Living and non-living things. So, all non-living things are called neuter gender. As table, bed, fan, window, these are non-living things. So it is called neuter gender. ऐसा हम लोग एक बार हिंदी में जानते हैं, जेंडर बेस्ड लिंग होता है। और मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया जेंडर के बारे में कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैस्कुलिन डिनोट्स अ मेल और फेमिनिन डिनोट्स अ फीमेल। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। ऐसा वर्ड्स एज बॉय, राम is the name of boy. The boy is a masculine gender. Sita is a girl. So Sita is a lady. Sita is a girl. So girl word is feminine gender. And common gender: parent, teacher, doctor, दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं। न्यूटर जेंडर: टेबल, बेड. These words are non-living things, so it is called neuter gender. Underline common gender. यहाँ जो सेंटेंस है, the director of the company is my uncle. So director word लेडी और जेंट्स दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सो इट इज अ कॉमन जेंडर।
एंड सीता इज माई सिस्टर्स फ्रेंड। ये फ्रेंड हम दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए। सो इट्स वर्ड इज अ कॉमन जेंडर, कॉमन। न्यूटर जेंडर, राहुल इज बॉय, Rahul is a boy. Boy is a masculine. Ramayan, the Ramayan is a holy book. But book, this is a book. It is non-living thing. So book is neuter gender. Neuter gender. Thank you.